इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू हाई परफॉर्मेंस हब। आज के हम एपिसोड के अंदर दोबारा से बात करेंगे रिगार्डिंग आवर करियर कि हम अपने करियर में कैसे ग्रो कर सकते हैं एंड उससे भी अमेजिंग आज हमारे साथ एक और स्पीकर है। शी इज अ कम्युनिकेशन कोच बाय प्रोफेशन along with leadership skills and our all time favorite coach is Nakul. So before I introduce them or welcome them on the show, I really want to understand आप में से कौन-कौन लोग excited है आज के सेशन के। Start sharing your comments in a comment section. Meanwhile, our coaches will come on the show, right? So let's do it. So उससे पहले before I really introduce them, let's have a look कि हमने last week क्या-क्या किया। लास्ट वीक हम लोगों ने बात करी थी कि कौन से लोग जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, कौन से लोग ग्रो कर पाते हैं। तो जो लोगों की ग्रोथ नहीं होती उनके दो कारण है, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन सर्वाइवल थिंग एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। मीन्स टू से कि वो लोग हमेशा जब भी जॉब करते हैं, जब कोई भी काम करते हैं, वो हमेशा और हमेशा अपने सर्वाइवल का सोचते हैं। अगर सर्वाइवल हो गया, सर्वाइवल मीन्स कुछ बेसिक थिंग जिसमें आपका रोटी कपड़ा मकान जो हम पहले बोलते हैं, आजकल अपने फोन्स ले लो, थोड़ा बहुत गाड़ी का खर्चा ले लो, तो दैट इज लाइक अ सर्वाइवल। व्हेन कमिंग बैक टू द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा है जिससे मेरा फ्यूचर सही चल रहा है, मैं अच्छी रोटी खा रहा हूँ, मेरे को और ज्यादा ग्रो करने की जरूरत। सो दैट ऑल कैटर्स कि हम लोग जो है सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लेवल पे खड़े हुए हैं, राइट? So with this note, let's welcome our first coach on place, Coach Rachna, along with Nakul as well. So welcome Rachna and Nakul on the show. Good to have you guys. So over to you, Rachna, first. Good evening, Jasmine. Good evening, Nakul, and good evening to all the viewers. It is indeed wonderful to be part of this session. I'm doing it for the first time. So, संभाल लीजिए, kind of. Right. तो मैं देख रही थी आप लोगों ने बहुत अच्छा एक कन्वर्सेशन पॉइंट स्टार्ट किया है, टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर ग्रोथ इंड्यूस्ड एंड हम कहाँ पे रहते हैं। तो आप जो सर्वाइवल और सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, ये एक हमारा एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, राइट? जैसे हम HR वाले अपनी भाषा में इट्स द मैस्लोस पिरामिड, बट लाइफ ऐसे ही चलती है। तो हम पहले सर्वाइवल की बात सोचते हैं। अब सर्वाइवल के पैरामीटर्स हमारी से पहले जनरेशन में, हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में कुछ और थी, हमारी कुछ और है। उसी तरह से सिक्योरिटी की भी है। जैसे आपने राइटली कहा, जब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो रोटी कपड़ा मकान देखते थे, आजकल लोग फोन आईफोन देखते हैं, राइट? एंड सिक्योरिटी तब होती थी कि बस एक छोटा सा घर हो जाए। आज हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं कि भाई मेरा पोर्टफोलियो कितना बड़ा है ना? तो डेफिनेशंस थोड़े से चेंज हुए हैं, लेकिन बेसिक पैरामीटर तो वही है, राइट? अब आगे कहा जाता है तो कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं। और द थिंग अबाउट दीज टू parameters is they are fear driven, they are insecurity driven, right? और इसमें एक खतरा ये भी होता है, people become very comfortable, तो उनके कंफर्ट जोन्स बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी जोन में आते हैं। हर चीज सेट हो गई है, जिसे हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है लाइफ सेट हो गई है जी, है ना? तो सब कंफर्ट में चले जाते हैं। लेकिन अब जिनको ग्रोथ चाहिए उनको इसमें से थोड़ा निकलना पड़ेगा, और निकलना ही पड़ता है तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। तो अब अगली स्टेज क्या आती है? अब आपका रोटी कपड़ा मकान स्लैश फोन्स एंड गैजेट्स तो हो गया, सिक्योरिटी भी हो गई, अच्छा खासा आपने इन्वेस्टमेंट। So I guess before Rachna we will proceed. Thank you so much for adding value to our last session, क्योंकि last time आप नहीं थे, आज आपने अपने views को add on किया on the first two levels. So thank you so much for this thing. So नकुल, आज हम लोग क्या लेके आने वाले हैं?
So before we start discussing about today's topic, Nakul, what do you want to say? I know this is a surprise for you as well, because I really don't want to speak much, but still that's why I called Rachna as well on the show, and because you both are going to take lead today, and I'm just going to ask questions, and I will enjoy your conversation. I hope you guys are okay with it. I'm fine. Perfectly fine. So तो yes, नकुल Nakul. बताइए अब आगे कहाँ बढ़े हम? So I guess I'll just do a recap. Yesterday we did a session on Instagram. It was fantastic with Coach Rachna, and it was huge value addition. So we are looking forward to have something on that context today. I have a screen shared available, Jasmine. If you wish, you can add that screen. Thank you so much. So this is the graph we were talking about. I guess the pyramid. Rachna ji, you can just continue from here, and then I'll take a lead in. I guess ओके, you were adding a तो very valid point हमने yesterday. जी जी हमने वी टॉक्ड अबाउट सर्वाइवल, वी टॉक्ड अबाउट सिक्योरिटी, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज बिलोंगिंगनेस. एक नेचुरल प्रोग्रेशन में भी जब एक इंसान के बेसिक नीड्स और उसकी सिक्योरिटी इज टेकन केयर ऑफ, अब उसे एक बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत पड़ती है. इसका मतलब क्या होता है? इसेंशियली इट मीन्स उसे एक रिकग्निशन, एक अटैचमेंट, एक एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है. अब यहाँ पे लोग ये देखते हैं कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, राइट? मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ, राइट? इन शॉर्ट मेरा भी वजूद है, एंड दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग देयर उस वजूद को वो रियलिटी में लाना शुरू करते हैं. आपका क्या ख्याल है निकुल? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो अभी अपन लोग जो आप कह रहे थे, सो बिलोंगिंगनेस का कल बहुत अच्छा कंटेक्स्ट आपने सेट किया. आई जस्ट रियली वांट टू रीकैप ऑन दैट, मे बी कि हाउ वी कैन टेक अहेड दैट बिलोंगिंगनेस पार्ट. जैसे आपने बोला क्रंचेस खोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में. बहुत सारी अमेजिंग चीज़ बताई थी, आई गेस. एंड देन आई ऑल्सो एडेड सम पॉइंट लाइक there are people who do this get-togethers, family get-togethers or retreats, where the extended families come in and there the attachment goes to the next level. So that is what I wanted to add the context, maybe, and just to initiate the conversation, I believe. Yeah. I hope I added a justified point here. Yeah. Rachna ji? तो Yeah. उसके Yeah. कुछ थोड़े और इंडिकेटर्स होते हैं. मैं थोड़ा सा और डिटेल पे जाती हूँ. इज दैट ओके जैस्मिन? I guess let's ask users first of all कि आप लोगों के क्या व्यू पॉइंट्स हैं, where are you standing right now, because जब तक आप लोग नहीं देखोगे आप pyramid के किस लेवल पे हो, कन्वर्सेशन होगी शायद थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स होगी, क्योंकि अपने आप को समझना ही इस प्रोग्राम का, इस डिस्कशन का मेन मोटिव है. So when you understand yourself, that really going to help you out. So definitely Rachna, I would love to hear कि आपका अभी next point of view क्या है. I guess हाँ जी, point by point चलते हैं. We will take Nakul's input as well over that point, right? राइट. तो मैं जैसा कह रही थी, थोड़ा हम अगर इंडिकेटर्स और डिटेल में बताएं तो पीपल विल बी एबल टू आइडेंटिफाई बेटर. तो एक तो मैंने कहा कि बिलोंगिंगनेस में अब वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ अपने अपने को थोड़ा सा असर्ट करना चाहते हैं, राइट? तो उसमें एंगेजमेंट भी बढ़ती है, लोगों की अपने काम में एंगेजमेंट बढ़ती है. उनको लगने लगता है कि हाँ, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी ज़रूरत है, हम वैल्यूड हैं, राइट? तो एक सेंस होता है, यस आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अगर अच्छा कोई ऑफर आया तो बंदा जाने को भी तैयार होता है, राइट? तो इतनी अभी स्ट्रॉन्ग डेप्थ लॉयल्टी की नहीं डेवलप हुई है, बट ही स्टिल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. बट अपॉर्चुनिटी का क्राइटेरिया शायद इस समय फाइनेंशियल ना होके ये होता है कि मैं कहाँ ज्यादा और बेहतर अपने को असर्ट कर पाऊं, मैं और अपने पोटेंशियल को यूज कर पाऊं, राइट? तो अगर एक अच्छा ऑफर मिला तो वो टेम्प्ट होगा. उसके दूसरे साइड पे अब तक क्या होता है, अगर आप देखें, एक 10-12 साल अब उसको काम करते हुए निकल गए.
एंड बंदा अब जो है ना थोड़ा सा स्टक फील करने लगा है, राइट। एंड क्योंकि वहां पे भी बाय दिस टाइम ऑर्गेनाइजेशन में भी ये करीब करीब मिड मैनेजमेंट का लेवल आ जाता है, आप वहां तक तो ग्रो कर लेते हैं, राइट। अब इसके आगे जो हायरार्की का जो पिरामिड होता है वो भी नैरो हो जाता है, सिलेक्शन भी लिमिटेड हो जाता है, इसलिए ग्रोथ रुक जाती है। ऊपर से एज वाइज भी बंदा 30-35 तक पहुंच जाता है और एक मिड लाइफ क्राइसिस सेट होने लगता है, तो थोड़ा बहुत ये लगने लगता है जिंदगी कहाँ जा रही है, राइट। हम थोड़ा सा अटक गए हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, क्या करें। कई लोगों को काफी क्राइसिस भी होता है कि व्हाट शुड वेयर, इन विच डायरेक्शन आई शुड टेक माय लाइफ। तो ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आपके व्यूअर्स को ये सारा से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो शायद इस जोन में है, राइट ना। Yes, Nakul, Yes. please add on your point of view over here. Yes. तो लेट मी गो हेड नाउ। तो जैसा आपकी रचना जी ने ऐड किया कि अगर आप अपने को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं दैट यू आर सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर जोन ऑफ बिलोंगिंगनेस, somewhere into belongingness, where I was even talking yesterday about you know, you see all these big consulting firms, they give you a good, nice, posh place to live in. What they're trying to do is they're trying to make you more comfortable in the organization. They are trying to make you feel that, you know, you are part of something big. So that is where it all starts, the goodie system, you know. And I guess Rachna ji was adding about the award ceremonies. You know, I heard that, you know, one of the great entrepreneur, what he does is, you know, he goes down to the family home, take out time on that basis, and you know, visit a couple of people who have done extremely well and connect with their families. And the later run, what he has shared is almost everywhere the experience was the family member literally cried because of the dedication the person has put in the job. So I believe that, you know, these things are really magical. So now the organization can start looking into the coaching perspective, the giving the career journey growth part to the belongingness person. And on the other side, if you are an employee, you can also look and go forward and talk to your higher authorities that, hey, this is what I feel like right now to take a move on. Would you like to suggest something on this line? You know, any projects, any leads, anything you feel like, you know, maybe handling a team or getting more capabilities in terms of team handling or vision planning or something like that, right? So I guess in that case, the belongingness zone is basically more of career oriented or coach oriented journey, you know, where you need a coach to, you know, help yourself move further. Yeah. So that is what I wanted to add here. Great, Nakul. Thank you so much for the validation. Rachita, before I jump into another question, I really want to understand, क्या कभी आपने अपने लाइफ में थ्रू आउट योर जर्नी आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है वेयर यू रियली फील वैल्यूड एज अ फैमिली मेंबर? Yeah, जहाँ पे absolutely. आपके मतलब पेरेंट्स ने या किसी और लव्ड वंस की कंपनी में वो वर्क कर रहे हैं, नहीं द नहीं, प्राइवेट मैंने पर्सनली भी किया है, और मैंने अपने पेरेंट्स को, मेरे मेरे फादर को भी देखा है। मैं जैसे कल भी ये शेयर कर रही थी, माय फादर स्पेंट हिज एंटायर करियर इन वन इंडस्ट्री, and he was in Mahindras and very proud to be in that company. And ऐसा नहीं था कि he had a godfather in the country इसलिए वो प्रोग्रेस कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अपनी मेहनत से, अपने अचीवमेंट से उन्होंने अपनी बढ़त हासिल की, ग्रोथ हासिल की, बिकॉज ही वॉज ऑफ दैट माइंडसेट। बट equally the organization also supported him, right? And he was given greater responsibilities, bigger responsibilities, appreciated, and you know, at every turn. तो ये मैंने तभी भी देखा, उस टाइम के, उस जनरेशन के ऑर्गेनाइजेशंस का मे बी अप्रिसिएशन करने का तरीका भले अलग हो, लेकिन वो डेफिनेटली था, राइट? अदरवाइज ऑल्सो मैं देखती थी कि कंपनीज ने काफी अच्छे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए थे, you know, for their employees. There were scholarship programs for their children. Later when I was working, even as a head HR, we used to run family welfare programs. We used to have family days in the company. क्योंकि क्या होता है, देखिए, आप जब अपने किसी एम्प्लॉई के बच्चे को
कि अचीवमेंट को पब्लिकली एक्नॉलेज करते हैं, उसकी गर्दन 2 इंच और ऊंची हो जाती है, राइट? तो वो प्राइड उसको जो मिलता है कि उसको एक सोसाइटी में उसको और उसके बच्चे को अप्रिशिएट किया गया है और ये कंपनी उसको इतना रिकग्निशन दे रही है, तो वो छोड़ने की नहीं सोचेगा, राइट? और एक फीलिंग ऑफ प्राइड और एक बिलोंगिंगनेस आती है कि हाँ भाई, हमारी कंपनी ने हमारे लिए इतना किया तो हमें भी कुछ करना चाहिए, राइट? और इसीलिए बहुत सारे मैंने देखे हैं, इवन ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग प्रोसेस एंड ड्यूरिंग माय वर्किंग प्रोसेस, बहुत सारे बेनिफिट्स थे। कुछ कंपनीज में एक मैंने काम किया जहाँ पे आई हैड a lot of freedom to take decisions, बिकॉज ये एक टाइम होता है, ये एक जोन ऐसा होता है जहाँ पे एम्प्लॉय अपने को असर्ट करना चाहता है, उसे एक इंक्लूसिविटी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, एटलीस्ट स्पॉन्टेनियस, नॉट वेरी हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, बट एटलीस्ट मॉडरेट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा चाहिए, राइट? तो ये सब जब उसे मिलने लगता है तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एक एम्प्लॉय में हमेशा आती है। उसका रिवर्स भी मैंने देखा है। मैं थोड़ा बोलूं उस पे? आई गेस लेट आस्क नकुल फर्स्टली कि नकुल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसमें पर्सनल टच के ऊपर। आई रियली वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एज वेल। Yeah, so I was able to recall something. I was working with a vice chancellor of a college, and then he asked me one beautiful line one day. Hey Nakul, where are you staying, and how you're managing your food? And that itself is got me a great touch. Ki, hey, somebody is there to think about you, and that is one perspective I carried there from there on. And another thing, I wanted to add about the Reliance industry. So Reliance Industries top management came out with a very amazing idea. Ki, hey, imagine Jasmine want to take up some music classes, and so they told that okay, we'll sponsor half of the amount for your music classes. You go and learn and come and perform after the whole the course was over and all. Probably teach somebody here in the campus, and then we'll reimburse if people rate you in a nice way, like you have got a good hands on it. So they will pay you a full reimbursement of your whole fee of that program. So that was a beautiful thing. Again, it shows that how company is caring about you. I heard that similar thing even Mahindra and Mahindra are offering, and many other top ventures. They give you an executive MBA to the top B schools, and that is another elite thing. That makes you feel that hey, you are part of something big, and that is where I would like to add the part of how you feel connected in the system. Yeah. So any other context audience have in mind, please feel free to drop in the chat box so that we can take it up. Yes, of course. I guess Rachna has left somehow. So Okay. Okay. No worries. We can meanwhile continue. You can coordinate with her. Yeah. join us. So please start putting up your question कि आपको कैसे लग रहा है, how do you think where you are currently in your stage and how you want to grow in your life, because आपका perspective भी उतना ही matter करता है जितना कि as coaches हमारा करता है, and this show is for you and for your growth, and if you won't ask your question might be you are losing on upon something. तो अगर आपको चांस मिल रहा है एंड इसकी वर्थ आप कैलकुलेट भी नहीं करते, इट्स इनटेंजिबल, देन व्हाई डोंट यू डू इट? सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है। सो क्वेश्चन पूछने से आइदर यू अंडरस्टूड एवरीथिंग और आइदर यू हैव सम काइंड ऑफ डाउट इन योर माइंड जो आपको क्लैरिफाई करना है। सो इफ यू आर विद मी जस्ट स्टार्ट टाइपिंग व्हाई इन अ सेट सेक्शन, एंड प्लस जो यूजर हमें बाद में सुनने वाले हैं, you should ask your question on a personal windows. You can check it out Nakul's, Rachna's YouTube, and if not we will add other details as well where you can get in touch with any coach, right? So yes, Rachna, you want to add something over here? Sorry, I went on the blip. So can you update me? What was the last comment you and Nakul were discussing? Because I was out for 2 minutes. So it was about Reliance. Yeah, yeah. It was about the Reliance industry, how they are offering the executive programs and learning programs for you.
where they sponsor the, Yes, you know. that is also a very important thing, because अब इस स्टेज पे बंदा सोचने लगता है कि what next, and people who are interested in growth, they understand the value of upskilling and upgrading themselves. And इसमें अगर organizations actively proactively उनको learning programs, training sessions या executive programs offer करती है, तो that becomes a very big incentive for them to continue with the company, and it is a measure that they are being valued, क्योंकि कंपनी उन पे कॉन्फिडेंस है और वो उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं. तो यस, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर नाउ बिकमिंग वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस, एंड आप देखेंगे बहुत सारे ऑल द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री आर ऑफरिंग एग्जीक्यूटिव MBAs, they are offering skills in, higher level skills like strategic management, analysis, risk analysis, etc. तो ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अब कंपनीज प्रोवाइड करने लगी हैं, और लोग भी अब इस पे दे आर बिकमिंग क्वाइट अवेयर एंड अवेलिंग ऑफ इट. बट ये बहुत एक अच्छा मेजर है वेयर यू कैन इंटीग्रेट द पीपल अ लिटिल मोर, बिकॉज अब जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मोर और लेस इज टेकन केयर ऑफ. तो कॉम्पनसेशन इज नॉट द ओनली ड्राइविंग कैरेक्टर क्राइटेरिया. और इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग यहाँ पे एक टिपिकल बिहेवियर आता है नकुल, कि कुछ लोग जो स्टक फील करते हैं वो सोचते हैं कंपनी में कुछ गड़बड़ है, मैं कंपनी बदलता हूँ, राइट. लेकिन अब जो वो दूसरी कंपनी में जाते हैं, एक तो दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, एक 6-7 महीने लग जाते हैं अपने को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए, राइट. अच्छा, उनको बढ़त मिली होगी, दे मे हैव गॉट अ रेज ऑफ मे बी 1 लेवल, राइट, और मे बी 2 लेवल्स, उससे ज्यादा तो नहीं मिलता है, राइट. तो जो रेज मिला है वो ठीक है, लेकिन टाइम ये थोड़ा सा बैक ट्रैक चला जाता है, बिकॉज आप उतना टाइम वापस लगा रहे हैं अपने को इस्टेब्लिश करने में, राइट. सो प्रिफर्ड इज कि आप इसको देखें कि आप अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में किन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं, राइट. और आजकल MNCs हैं, बड़े कंपनीज हैं, तो उनमें इन हाउस बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं विच पीपल कैन अप्लाई, राइट. हाँ, यस, कंडीशंस रहती है, क्राइटेरियाज रहती हैं, वो तो हर जगह रहती हैं, राइट. तो ये एक थोड़ा सा एक रेड फ्लैग रहता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर अब सिर्फ कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता. अब ये भी देखना होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे कितना स्कोप मिलेगा ग्रोथ के लिए, और मेरे ग्रोथ और मेरे उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है. Thank you so much, Ratna, for a great value, and Nakul as well. And because हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, so we will continue rest of the discussion in upcoming episodes. So आज के लिए guys, I really want to ask you where you are currently. Are you on survival mode, security mode, or on belonging side? And if you are feeling stuck in your life, please do share your experience in a chat section so that we can understand, and if we can help you out to overcome your this issue, then we are happy to serve you, because you guys are adding so much value by watching this podcast and appreciating us in any manner. So thank you once again, everyone. So before we wrap up today's session, I really want to give a summary about what we have discussed. Coach Resna has started with his own point of view about the survival and security. Then Nakul added कि belongingness में क्या है. Even Resna has added value कि belongings हम लोग कहाँ पे एक अपना समझ के काम करते हैं, तो वो चीज पे belong करते हैं. Then Nakul also has shared few example of industries like Reliance and other stuff where he has worked. Rachna as well told about Mahindra's and Mahindra's example of her father journey. So guys, it's not about where you are currently. It's all about your journey and your mindset moreover. वो mindset जो आपको grow करने में help करेगा और decide करेगा कि आप currently हो कहाँ पे. And if you really want to grow,
Do not miss any of these episodes because we will take you, कहते हैं ना, हैंड होल्ड करके आपको आगे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि हर एपिसोड के अंदर हम कुछ नया लेके आएंगे, कुछ नए ट्विक्स करेंगे which really gonna help you out to grow in your life. Would you like to add something, Rachna or Nakul, before we close this session? I think it's wonderful. And Yeah. yes, people need this kind of reminders from time to time. And if we can be of little help to contribute them in their growth journey, it is an honor. One short takeaway from my end, I guess. We have been discussing all three on this line, I guess. One beautiful thing all these members can do who are either on survival or on wants to go into the belongingness zone. You can start asking your senior managers what are your top three priorities, how I can create a 10x value to the organization. If you can start asking these particular questions, you can actually get a very wonderful answer and start making a checklist or action plan accordingly. And this could really help you to progress faster in your career because the employer will also understand that this guy is trying to put a lot of efforts to grow. So I guess that can be one indicator you all can try. Amazing. Thank you for having us here, Jasmine, and you're doing a wonderful job. Yeah, thank you. आई गेस नकुल ने ना लास्ट पे जाते जाते एक फिक्सर लगा दिया है कि गाइस ये चीज याद रख लेना, ये चीज तुम्हें एक एड ऑन एडवांटेज देके जाने वाली है, इसको कर लेना पकड़ के. सो इट्स अ वंडरफुल टू हैव यू बोथ एंड ऑलवेज कि आप लोगों के साथ जो डिस्कशंस होती हैं वो एक माइंड ब्लोइंग होती है, केयरफ्लो, जहाँ आई ओपनर होती है फॉर मी एज वेल. And of course, I know our users are going to love it. It's not about my session, it's all about our session. So from now onwards, we can say whenever we need it, Rachna is there to support us, right, Rachna? I can. Always at your service. Thank you so much. Feeling so honored कि Nakul, right? जहाँ पे आके हम लोगों को कहीं पे भी जरूरत होगी, now we have another partner to take No, this yes, show up. that is what I was telling yesterday. रचना जी के आने से एक huge value addition होता है for sure because she has amazing experience in the industry, so that really matters a lot. Yeah, thank you for Thank giving you. your precious time, ma'am. Yeah, Thank you so much. It's an honor. So thank you so much, both of you guys. Have a lovely weekend ahead. Weekend तो है, but एक weekday भी बचा, but कल से वाइब शुरू हो जाएंगी सबकी weekend वाली. So guys, do enjoy a lot your weekend along with your family, with your loved ones. But meanwhile, start working on your mindset as well because your mindset will help you to be successful in your life. With this note, see you next week, same time, same place with our amazing coaches as well. Take care. Thank you. Thank you.